Bismillahirrahmanirrahim. Shaista Riaz is here with lecture number 14. Our today's topic is past perfect tense. Past perfect tense में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो कि किसी एक और एक्शन से पहले हुए होते हैं. Definition: In this tense we talk about the actions that happened before something else. Past perfect tense को past का past भी कहा जाता है. अब इसको समझने के लिए हम टाइमलाइन को देख लेते हैं. Just like this is present time and this is past. Past perfect tense में एक एक्शन होने से पहले भी एक एक्शन हो चुका होता है. इसमें दो एक्शंस होते हैं. फर्स्ट एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और उसके जो बाद जो एक्शन होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. तो पहले ये हुआ कि पहले वो वहाँ से जा चुका था, तब मैं पहुंचा. इट मीन्स मेरे पहुंचने से पहले वो वहां से जा चुका था. ओके, सो फॉर्मूला इज फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव हैड प्लस subject plus third form of the verb plus object and question mark. For interrogative sentences, had plus subject plus not plus third form of the verb plus object and question mark. For double interrogative, question words what, why, where, how plus had plus subject plus third form of the verb plus object. We will learn how to use past perfect tense accurately with examples. The train had just left when I reached the station. Here we can see there are two parts of the sentence. One is the train had just left. कुछ देर पहले ट्रेन ने लीव किया. When I reached the station, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा. तो अब यहाँ पे just का भी जो यूज़ है वो past perfect tense में उन एक्शंस के लिए होता है जो कि कुछ ही देर पहले हुए होते हैं. एक हमने ये देखा कि यहाँ पे टू एक्शंस हैं, हैड, जस्ट लेफ्ट एंड आई रीच्ड. तो इट मीन कि जो पहले एक्शन होगा उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और जो सेकंड एक्शन है उसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन. व्हेन आई वेंट देयर दे हैड टेकन लंच. इट मीन नाउ in this sentence you can see there are also two actions. When I went there, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और आखिर में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है. अब यहाँ इस चीज़ को समझने के लिए कि हमने कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, तो उसे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था. क्योंकि जब वो पहुँचा उसके पहुँचने से पहले ही वो लोग खाना खा चुके थे. पहले एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं जो पहले हुआ था और बाद में होने वाले एक्शन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम ऑलवेज जो है वो यही रखें कि पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करें. हम कोई भी टेंस पहले यूज़ कर सकते हैं. वी हैड कॉट द थीफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड. सो दिस इज ऑल्सो पहले इन्होंने चोर पकड़ लिया था. दिस एक्शन हैपन फर्स्ट एंड देन पुलिस अराइव्ड आफ्टर दैट. दे हैड लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years व्हेन दे सोल्ड इट. यूज ऑफ सिंस एंड फॉर भी हम इसमें यूज करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दे हैड लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years when they sold it. अब दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम ये when they sold it लिखें, ज़रूर लिखें, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पता होना ही चाहिए कि जब वो हम तब की बात कर रहे हैं कि तब जब वो बेचने लगे थे तो तब उनको 10 साल हो चुके थे कि वो यहाँ रहते हुए. तो वी कैन इवन स्किप बट द कॉन्टेक्स्ट शुड बी क्लियर. I had never believed until she told me herself. Had never believed कि मैं
believe कभी भी नहीं करता until she told me herself. This is past indefinite tense. It happened later. First action was never believed. Teacher had delivered the lecture. In this sentence we see that there is only past perfect tense. It can be used like this as well, but we know when teacher had delivered the lecture, it means that when I entered the class, teacher had delivered the lecture. The lecture was over. So the past event, the event that we discuss in past indefinite tense is in our mind. Before he questioned, I had apologized. It means before he asked about the mistake, I had apologized. मैं पहले ही मैंने क्या कर लिया था? I had apologized. इससे पहले कि वो मेरे से क्वेश्चन करता. Contraction used in past perfect tense. Contraction means short form. Just like instead of using had in full form, we can use it in its short form in spoken and written English, but it is common in formal. But it is common in informal. I had, I'd, you had, you'd, she had, she'd, he had, he'd, they had, they'd, we had, we'd. In negative sentences, just like I had not completed the work when she came, I hadn't. Had not can be written down. Hadn't, I hadn't completed the work. Similarly, she hadn't, he hadn't, you hadn't. Sentences: positive, he had reached when I called him. Negative, he hadn't reached when I called him. Interrogative, had he reached when I called him? Interrogative, had he not reached when I called him? Double interrogative, where had he reached when I called him?